device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. हेलो दोस्तों, आप इस मोटर को तो जानते ही होंगे। इस मोटर में सबसे ज्यादा खराबी आती है, इसके पावर सप्लाई के वायर टूट जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में वायर को रिप्लेस कर दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये 2-4 कॉर्नर देख रहे होंगे, इनमें ये छोटे छोटे खंड हो गए। आपने नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो में ज्यादा नहीं तो 10,000 व्यूज प्लीज करवा देना। दूसरी वायर लगाने के बाद और उसे अच्छे से सोल्डरिंग करने के बाद हमको ढक्कन को वापस से पैक कर देना है। और इसे चारों तरफ से ठोक कर इसके कोणों को वापस टेढ़ा कर देना है ताकि ढक्कन आसानी से न खुले।